ओके ओके स्टूडेंट्स। तो टुडे ये जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्लास 10 के लिए मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे जो हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ओके सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो स्टार्ट करते हैं। ओके सो एज वी हैव स्टडीड इन द क्लास 9th में हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड क्वाड्रेंट्स के बारे में कि this will be your first quadrant, this will be your second quadrant, this will be your third quadrant, this will be your fourth quadrant. And in first quadrant, the coordinates are plus plus, in the second quadrant, minus plus, and in the third quadrant, minus minus, and the fourth quadrant, plus minus. Okay. So what is the coordinate system? इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई अगर मुझे पोजीशन डिफाइन करना है तो हाउ कैन वी डिफाइन इट? सो यू हैव टू टेक वन रेफरेंस एंड यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द रेफरेंस एंड द पॉइंट, देन यू कैन डिफाइन द पोजीशन। बट अगर मैं 2D की बात करूं इन एक्स वाई, देन देयर विल बी टू coordinates. Yeah, one is the value of x, it means x coordinate, and another one is y coordinate. Okay, और x coordinate को हम बोलते हैं एब्सिसा एंड y coordinate को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ओके, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, in any coordinate system. Suppose I am talking 1.1 and 3. So this is the x is abscissa and y is ordinate, and 1, 3 both are positive numbers. So it will lie in the first quadrant and we can easily point out the position of this point A. Okay, suppose this is your 1 and this will be your 3. If there is 3, there is 1, then the point will be, this will be your A point. So we can do easily. हमने 9th क्लास में ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। तो 10th क्लास में हमारा जो फर्स्ट जो कंसंट्रेशन रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई दो पॉइंट हैं। सपोज this is your first point, this is your second point, this will be your A, this is your B, and the points coordinate are x1, y1, and these are x2, y2. Okay, and suppose this is your reference line, means this is your x-axis, this is your y-axis. Now you have to find out the distance between these points. Okay, so how to find out the distance between these points? So इससे हमें जो एक जनरलाइज फॉर्मूला मिलेगा उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और वो हम कहीं भी यूटिलाइज करेंगे। आपके पास कोई दो पॉइंट गिवन होंगे और वो फॉर्मूला यूज करेंगे, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? नाउ यू कैन सी हियर, this is the value of x1 and this is your y1, and if I here, this is your y2 and this is your y1. If I extend it, this one, and this is your meeting point, this we can say this is your P. Okay, so basically you have to find out
This will be your x2. You have to find out AB, the distance between 2 points. So if I see here, this is your x1, this is your x2. What is AT? AT is the difference of x2 minus x1. This one. Okay, this will be your x2 minus x1. If I talk about in the vertical direction, so dt will be y2 माइनस y1. इस वाले पॉइंट, इस वाले डिस्टेंस से हम ये वाली डिस्टेंस को अगर माइनस कर दें तो हमें bt मिल जाएगा. ओके, so this will be your y2 minus y1. Now you can see here what is AB, because this angle is your 90 degree. So since triangle ATB is right triangle, so using Pythagoras, theorem, AB square will be equal to AT square plus BT square. So AB equal to square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is your distance for. Okay, so using this formula you can easily find out or calculate the distance between 2 points. Okay, so now we can take the example of questions based on the distance formula. So if you talk about your in example of the NCERT, example number 1. In the example number 1, you can see you have a 3 points. Suppose A 3 2, B minus 2 minus 3, and C 2 and 3. And question says these 3 points form a triangle. Okay, so you have to tell the type of triangle. Type of triangle. So how to do that? So you have to find out the distance between AB, BC and CA. Okay, so first of all, you have to calculate AB. Suppose this is your x1, y1, x2, y2 and x3, y3. Okay, so using the formula AB equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So how to calculate? Minus 2 minus 3 whole square plus minus 3 minus 2 whole square, and it will be 5 minus 5 whole square plus minus 5 whole square. That will be under root 25 plus 25. That will be 50, under root 50. And it will be your, if I find out the square of this 50, that will be 7.07 approx. Okay, हमने क्लास 8 में सीखा था स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डेसिमल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट सेम BC. तो BC सपोज x3 माइनस x2, जस्ट पॉइंट चेंज हो जाएंगे. x2 माइनस x1 था, या x3 माइनस x2 हो जाएगा. तो 2 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस
3 minus 3 whole square. So that will be, you can see here, 2 minus minus plus 2 plus 2 4, 4 square plus 3 plus 3 6 square. So it will be 16 plus 36, and that will be square root 52. And when you find out the square of this 52, then it will come 7.21 approx. Okay, now you have to calculate CA or AC. So CA will be x, बेसिकली हम x2 minus x1 भी कर सकते हैं, x1 minus x2 भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर बिकॉज इट इज योर स्क्वायर. तो CA की बात करें तो 3 minus 2 whole square plus 2 minus 3 whole square. So it will be 1 square plus 1 square minus 1 whole square. So that will be also plus minus 1 whole square. That will be 1 plus 1. It is square root 2. So square root 2 basically 1.41 approx. हम स्क्वायर रूट में भी बात कर सकते हैं, डेसिमल में भी बात कर सकते हैं. ओके, अब हमारे पास साइड तो आ गई. वी आर सीइंग हियर कि तीनों साइड डिफरेंट है. तो तीनों की तीनों साइड डिफरेंट स्केल ट्राइंगल है, बट इन तीनों में रिलेशन क्या है? एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो नाउ यू कैन सी CA, BC and 50, which is largest side, that is your BC. If I talk about 1.41 here, so if I talk about under root 50, under root 52 and under root 2, so BC square equal to 52, just square it, and AB square equal to 50, and CA square equal to under root 2. Now if I add AB square plus BC, AB square plus CA square, that will be 50. Sorry, this will not be under root 2, it will be 2. 50 plus 2, that will be 52, and it will be your BC square. So now you can see it follows the Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem. If Pythagoras theorem it is following, then triangle ABC is a right triangle. ओके, तो हम कोई भी हमें पॉइंट दे दे, अगर वो बोल रहा है कि वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वो हमें बताना है. तो हमें साइड्स निकालनी होगी, डिस्टेंस निकालनी होगी, जो डिस्टेंस फॉर्मूला, देन यू कैन फाइंड आउट. ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस will be asked in the exam. Same you can practice. Example number 2, I will tell you how to do. You have 4 points, A 17, B 42, C -1, and B -4. Okay, so question is saying you have to prove that ABCD is a square. Okay, you have to prove it. So for the square, we know that all sides should be equal. ये conditions हमें पता होनी चाहिए. AB equal to BC equal to CD equal to DA. It is not enough कि AB equal to BC equal to CD और DA यही हमारा हो जाए. आपके diagonals also equal. Diagonals also equal. It means AC should be equal to BD. Okay, so you have to calculate 6 distances. तो अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ ABCD, तो A, B, C, D. So this will be equal and diagonals also equal. Okay, you have to prove it. So you can easily find out the distances between A, B, B, C, C, D and DA.
then you can calculate that using the distance formula. Then you can easily uh, prove that it is square if AB equal to BC equal to CD equal to DA and AC equal to BD. So practice by yourself. Okay. Now, third type of question in the distance based on distance formula. Suppose you can see the question: find a relation between x and y such that point xy is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5. Okay. So अगर हम बात करें, this is your P point, this is your Q point, this is your O point. तो एक पॉइंट है जो P और Q से इक्विडिस्टेंट है. सपोज this is your O point, this is your P point, this is your Q point. Okay. So this is your 7, 1, this is your 3, 5, and this is your X, Y. And equidistance means since O is equidistant from P and Q, so OP equal to OQ. So OP basically is square root. Now you can see OP x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square equal to x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. Okay. Now both sides are square, so you can remove the square here. So x minus 7 whole square plus y minus 1 whole square equal to x minus 3 whole square, y minus 5 whole square. Now we know that the formula of a minus b or a minus b whole square. So a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. You have to use this identity. So x square plus 49 minus 14x plus y square plus 1 minus 2y equal to x square plus 9 minus 6y plus y square plus 25 minus 10y. Now you can see x square, y square, y square. This is your 14x and this is your minus 2y. Now constant should be on the right side and variables in the left side. So minus 14x and sorry, this will be your 6x plus 6x इधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा minus 2y plus 10y equal to 9 plus 25 minus 49 minus 1 because ये plus plus है. Now minus 8x plus 8y equal to 9 plus 25 34 and 34 minus 50, that will be minus 8x plus 8y equal to minus 16. अगर मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, डिवाइड कर दो माइनस 2 से होल इक्वेशन को, तो देखोगे माइनस 8x माइनस 2 प्लस 8y माइनस 2 minus 16 divided by minus 2. So it will be, sorry, minus 8. Minus 8. Okay. So it will be x minus y equal to 2. Minus and minus. Okay. So this is the relation between x and y. You can find out easily. Okay. So this type of questions will be in the exercise. So I will show you the exercise basically. Then you can do practice. If you have any question in the exercise, then you can write in the comment box. I will solve this question in the next video. And this will be your chapter 7.